Hello student, today I will discuss a new topic, the menstrual cycle. Menstrual cycle are basically occur in a primate. Primate means it is basically found in female and apes and monkey. It is approximately 1 to 28 1 to 28 day cycle. So that is called the menstrual cycle. The menstrual cycle are controlled by the following factor. First is called the uterine event या uterine wall. दूसरा ovarian hormonal level, फिर ovarian event and pituitary hormonal level. At the age of puberty, it is approximately 11 to 13 years old, female girl child. The pituitary glands are activated. It secretes two types of hormones, follicle stimulating hormones and luteinizing hormones. And ovarian hormone, basically progesterone and estrogen, there are two types of hormones are secreted by the ovarian hormones. And uterine wall, the inner lining of uterine wall is made up of the endometrium, and these walls are decreased and degenerate in influence of the hormones. So first menstruation cycle या menstrual cycle या menstrual cycle are divided into following steps. First step is called the menstrual phase. Second step is called the follicular phase, ovulation and luteal phase. There are four phases. First, menstrual phase, follicular phase, ovulation and luteal phase. So these phases are explained with the help of hormonal balance. Firstly, 1 to 5th day, menstrual phase are start. And the menstrual phase are start, that means the degradation of the inner lining of the endometrium. The endometrium lining are degenerate, and due to which the menstrual flow, and with the menstrual flow, unfertilized eggs are come from the body. So these is 1 to 4 या 1 to 5, it may be vary. 1 से 5 दिन या 1 से 4 दिन तक होती है ये साइकिल, जिसको menstrual phase कहा जाता है. At the low progesterone level, to positive feedback of the follicle stimulating hormones. जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, इस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होता है, वैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर बेसिकली प्रेजेंट at the anterior lobe of the pituitary gland. ये anterior lobe के pituitary gland में follicle stimulating hormones पाया जाता है, और ये activate होता है at the low concentration या low amount of the progesterone level. जैसे progesterone level कम होगा, वैसे follicle stimulating hormones बढ़ने लगेंगे. और the secretion of follicle stimulating hormone to increase the follicle, stimulate the follicle, that is the primordial follicle, it make the primary, secondary and grafted follicles. By the formation of large number of cells, that cell is called the granulosa cell, and the formation of the large number of granulosa cell, these secrete the estrogen. ये जो granulosa cell होते हैं वो estrogen का secretion करने लगते हैं, और at the mature follicle या ग्रेफन फॉलिकल है द लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल. ये जो ग्रेफन फॉलिकल है सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल रखता है. सो इट सिक्रीट द लार्ज अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन. ये सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है. व्हेन द सिक्रेशन आर द एस्ट्रोजन आर लार्ज इन अमाउंट, इट इज द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. जैसे ही ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन का सिक्रेशन यहाँ से होने लगता है, लेकिन ग्रेफन फॉलिकल में सबसे ज्यादा होता है, और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स सबसे ज्यादा अपने पीक पर जाती है,
और जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा अपने एक्सेस पॉइंट पर या मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है, उसी समय oogenesis या एवोल्यूशन विल बी टेक्स प्लेस, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ये मैच्योर ग्रेफन फाल्कस रैप्चर होकर सेकेंडरी oocyte आपके ओविडक्ट में चले जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द ग्रेफन फाल्कस आर कॉल्ड द कार्पस ल्यूटियम and this phase is called the luteinizing phase. And what event is takes place in the wall of uterine? जैसे जैसे ही एस्ट्रोजन बनते हैं वैसे वैसे ये फिर से रीजनरेट होते हैं और इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 2 से 3 मिलीमीटर थिक होती है। लेकिन जैसे ही ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम आल्सो सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन, the level of progesterone are high and the formation of the corpus luteum. जैसे कार्पस ल्यूटियम बनता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है एंड द प्रोजेस्टेरॉन लेवल आर रीजनरेट द एंडोमेट्रियम वॉल, और ये एंडोमेट्रियम वॉल को रीजनरेट करती फिर से बनाने का काम करती है। इफ द फर्टिलाइजेशन आर टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एट दैट कंडीशन इट मेंटेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये मेंटेन करेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है दैट कंडीशन अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर कम्स थ्रू द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड दीज कार्पस ल्यूटियम आर ग्रेजुअली डिजनरेट एंड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आल्सो बी डिक्रीज। तो दैट मीन्स दीज menstruation cycle या menstrual cycle are controlled by the ovarian hormone level and pituitary. In pituitary, follicle stimulating hormones which initiate to formation of the follicles, greffal follicle. Luteinizing hormones, it help with the broken down of the greffal follicle and ovulation. Ovulation are basically occur at the 14 days. If the menstrual cycle are start 1 to 5 menstrual cycle and 5 to 14. At the date of 14, that is called the ovulation will be takes place, and from 14 to 18 that the luteal phase, क्योंकि यहाँ कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दो हार्मोन्स जो ओवेरियन में है वो कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफन फॉलिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, जैसे ग्रेफन फॉलिकल बनेगी वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और ये दोनों लेवल oogenesis में मदद करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना oogenesis में एग को डिस्चार्ज करने में मदद करता है एंड ये ग्रेफन फॉलिकल्स जब रैप्चर्ड हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte बाहर आती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द ग्रेफन फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड टू कार्पस ल्यूटियम एंड कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज अ हार्मोनल ग्लैंड, इट secrete द प्रोजेस्टेरॉन। So it is all about the menstrual cycle in case of female.